हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर डे फ्रॉम द यूरोप ट्रिप। और आज हम जाएंगे द आइकॉनिक पोसिटानो। सच बताओ, ये जगह एकदम जन्नत है। बहुत खूबसूरत व्यूज़ हैं यहाँ से, और एकदम कई बीचेस तो ऐसे जस्ट सो गुड, और आपका मन कर जाएगा कि वहीं जाके बस दिन भर बैठे रहे। और नीचे मेरे यहाँ पे अभी बहुत सारे बोट्स एंड यार्ड्स चल रहे हैं। यहाँ पे एक्चुअली नॉर्मल टैक्सीज, रोड टैक्सी के अलावा बोट टैक्सीज भी चलती हैं, जो इन अलग अलग बीचेस में आपको घुमाती हैं, आपको ले जाती हैं। और ये भी एक अच्छा तरीका है और टाइम सेविंग तरीका है टू एक्सप्लोर दिस एरिया। Made it to Positano. Look at the colorful buildings behind me. Down there is a beach जहाँ पे बहुत सारे बॉलीवुड और हॉलीवुड मूवी शूट हुई है। आपने वो गाना तो देखा ही होगा, घुंघरू टूट गए, वो भी यहीं पे शूट हुआ है नीचे बीच पे। एंड आपने ये जगह इंस्टाग्राम पे तो देखी ही होगी। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर प्लेसेस ऑफ अमाल्फी कोस्ट। और बस ये जगह है, ये हम हैं, और अब हम नीचे जाएंगे टू एक्सप्लोर। While strolling through the enchanting streets of Positano, we found ourselves in the beautiful cobblestone streets, colorful buildings, basically a perfect background for pictures and stories. These small boutiques and roadside cafes with tasteful dishes also adds to the vibe of Positano. Also, be ready to walk downhill and uphill, as Positano is situated over a hill, and you will find so many cute places at these simple corners or into small lanes. Ciao! So, we are in the Positano town right now, और काफ़ी चहल पहल है इधर। इस पर्टिकुलर एरिया में बहुत पॉपुलर है वो है लेमन सीलो, जो कि एक पर्टिकुलर ड्रिंक है, जो यहाँ का अल्कोहलिक ड्रिंक है और नींबू से बनता है। और यहाँ पे सबसे ज़्यादा खेती नींबू की होती है, नींबू एंड टमाटर की। तो हर चीज़ में आपको नींबू मिलेगा, विच इज़ ग्रेट। पीपल जाम है यहाँ पे, आगे पीछे, ऊपर का भी अच्छा है। ओके फ्रेंड्स, तो ये है, मैं खड़ी हूँ अभी पोसिटानो के बीच पे, और बहुत भीड़ है, अभी बहुत भीड़ है। लोग यहाँ पे सनबाथ कर रहे हैं, एंजॉयिंग द बीच। मेरे पीछे है द आइकॉनिक व्यू ऑफ पोसिटानो, और बस यही है पोसिटानो। यहाँ की गलियों में घूमते रहिए, खाते रहिए, पीते रहिए, इस समर को एंजॉय करते रहिए। दैट्स द लाइफ people are enjoying right now. With these charming views, now we are heading to another popular yet picture perfect town, Sorrento. Sorrento is known for its breathtaking views, delicious cuisine, rich history. ओके फ्रेंड्स, सो आई थिंक इस इलाके को एक्सप्लोर करने का सबसे बेस्ट तरीका है द मोटर बाइक, क्योंकि आप कोस्ट लाइन के साथ चलते चलते यू एंड अप इन डिफरेंट प्लेसेस।
और अभी हम बस पोसिटानो से कोस्ट लाइन को एक्सप्लोर करते करते पहुंच गए हैं सोरेंटो। सोरेंटो पोसिटानो से ज़्यादा दूर नहीं है, अबाउट 30 किलोमीटर्स, और रास्ता बहुत ही अच्छा बना हुआ है and you will end up here within 45 minutes or so. If you want to stay in Amalfi, you can also stay in Sorrento and you can start exploring from here to Amalfi Coast. The narrow streets are lined with vibrant shops, colorful buildings and charming cafes. It's impossible not to fall in love with the lively atmosphere here. Let's take a stroll and soak up the local vibe. So, just enjoying the Sorrento from the top of a cliff. यहाँ पे एक्चुअली बीचेस नहीं है, सैंडी बीचेस नहीं है, यहाँ पे रॉक्स पे बहुत सारे रेस्टोरेंट्स और कैफ़ेज़ खुले हुए हैं, जहाँ पे आप बैठ के चिल कर सकते हैं। और वही नीचे यहाँ से वही व्यू है, यहाँ से व्यू है, क्रूजेस दिख रहे हैं, नेपल्स दिख रहा है और नेपल्स का वोल्केनो दिख रहा है। If you're interested to take a tour to Capri, this is the place where you can hire a boat or a boat tour to enjoy a day of Capri. So, अगर आपको अमाल्फी कोस्ट बजट में एक्सप्लोर करना है तो सोरेंटो could be one of your options to stay. यहाँ पे काफ़ी अफोर्डेबल अकोमोडेशंस अवेलेबल है, B&B से लेके हॉस्टल्स से लेके होटल्स तक। आपके बजट के हिसाब से यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे और यहाँ से अमाल्फी कोस्ट ज़्यादा दूर भी नहीं है। सो इफ़ यू कैन हायर अ स्कूटर और अ कार और थ्रू बस आप आराम से अमाल्फी कोस्ट एक्सप्लोर कर सकते हैं। सोरेंटो इस एरिया का काफ़ी बड़ा शहर है और ये नेपल्स से पास है। सो सोरेंटो की नेपल्स से कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है, ट्रेन्स एंड बसेस काफ़ी फ्रीक्वेंट है और इसीलिए यहाँ पे लोग आके प्रेफर करते हैं रुकना। सुबह सोरेंटो में चिल करने के बाद अब हम वापस जा रहे हैं अमाल्फी कोस्ट की तरफ और विदिन 45 मिनट्स वी विल बी देयर। And it is time to leave Amalfi Coast with memory of a lifetime. Alright friends, so that was all from the Euro trip. अभी मैं बैठी हूँ नेपल्स एयरपोर्ट पे and we are flying back home. अगर आपको वीडियोस अच्छे लग रहे हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें और शेयर ज़रूर करें। I will see you in my next video. Thank you so much for watching. Bye bye.